Hello children, today I will do different types of WBCs after staining. Okay, so let's start. Here we have different types of WBCs. So the two major categories of WBCs are granular and non-granular. Granular WBCs have granules in their cytoplasm and they have lobed nucleus. Non-granular, they do not have granules in cytoplasm. ग्रैन्यूल्स एक दाना दाना तरह का चीज़ होता है. अगर साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हैं फिगर में भी, अगर ये ग्रैन्यूल्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, liquid droplets you can say, then they are called in cytoplasm, then they are called granulocytes or granular WBCs. And if they do not have granules in the cytoplasm, you can see in the figure, these do not have granules, then it is called non-granular. And they generally have a single large nucleus. Okay. Now granulocytes or granular WBCs are of three types: neutrophils 6.2%, eosinophils 2.3%, and their count increases in allergies, and basophils 0.4%. Now why they are named so? Because when we made a slide and we stained them, then we found that neutrophils stained with neutral dye, eosinophils stained with dark red eosin, that is acid dye, and basophils stained with methylene blue, which is a basic dye. Okay, so let's see the differences between them. First of all, the similarity is that all three have granular cytoplasm, and the difference is that this has 3 to 4 lobed nucleus, as you can see. This has 2 lobed nucleus, and this has multi-lobed or many-lobed nucleus. ओके, इसका न्यूक्लियस ठीक से वेल डिफाइन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन है, लोब्स हैं इसमें. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन. एक कॉमन फंक्शन है, सभी WBC का एक कॉमन फंक्शन है, वो है कि ये लोग बहुत जल्दी बैक्टीरिया इनकल्फ कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा, WBCs हेल्प टू फाइट जर्म्स, नो डाउट. सो दे हेल्प इन phagocytosis, मीन्स दे इनकल्फ बैक्टीरिया. They also, eosinophils also help in phagocytosis, that is they engulf bacteria. And basophils have a different function which we will discuss. But eosinophils have one more very important function, that is they are associated with allergy. As I just told you, their count increases in allergies. जब भी कोई allergic site होता है, वहाँ पे eosinophils आ जाते हैं. ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, एंड दे फाइट द जर्म्स. नाउ बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन विच डायलेट द ब्लड वेसल्स, एंड दे ऑल्सो रिलीज हेपरिन एंड एंटी कोएगुलेंट. दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बेसोफिल, बिकॉज दिस इज द ओनली WBC विच प्रोड्यूसेस हेपरिन. हेपरिन क्या है, माने हमारे ब्लड में ही एक एंटी कोएगुलेंट है. व्हेन आई विल टीच क्लॉटिंग आई विल कम अगेन टेक अप दिस पॉइंट, बट अभी के लिए याद रखो कि बेसोफाइल हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं, बेसोफिल्स ऑल्सो रिलीज हेपरिन. ओके, एंड ऑल द थ्री आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. बोन मैरो इज द मेन प्रोडक्शन साइट of even RBCs, even WBCs, and even thrombocytes. So it is very easy to remember, and it is also very important question, has been asked as an objective question many years in ICSE. So it is the main production site, bone marrow. Now coming to the non-granular or do not have granules, that is agranulocytes. Now these can be divided into two categories, lymphocytes and monocytes. Now lymphocytes, as you can see, that the size also suggests, if you see all the sizes also, then this is the smallest type of WBC. Smallest type of WBC is lymphocyte. अग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म तो है ही, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है, लिम्फोसाइट का भी, मोनोसाइट का भी, बट दे हैव अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस. और इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है. सिंगल लार्ज तो होता ही है,
लार्ज न्यूक्लियस ग्रैन्युलोसाइट का कैरेक्टरिस्टिक ही है, बट इसके साथ उनका किडनी शेप न्यूक्लियस भी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोनोसाइट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC. They are produced at the site of infection, where they transform into macrophages. At the site of infection, they transform into macrophages. Okay, now lymphocytes produce antibodies which kill germs, and again monocytes help in engulfing germs, just as we saw these one, they engulf bacteria and all, they do phagocytosis. Same as this, monocytes also do phagocytosis. But lymphocyte produce antibodies. सबसे important function है ये WBC का, एक बहुत important function है producing antibodies. ये कौन सा WBC करता है? That is lymphocyte. This is very very important. 1 mark of question can come from here. That is which WBC produces antibodies? तो बच्चों याद रखना lymphocytes. Which WBC produces histamine? Basophils. Which WBC is associated with allergy? Eosinophils. And then where is this lymphocytes produced? The production site is bone marrow, lymph glands, spleen और tonsil, दोनों जगह होते हैं, और बाकी सब सिर्फ बोन मैरो में होते हैं. सो लिम्फोसाइट, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है लिम्फ, तो ये लिम्फ ग्लैंड में होगा ही होगा. लिम्फ ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, स्प्लीन में भी, टॉन्सिल में भी, और इसके अलावा बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होता है. So very easy, just you have to note some key notes I have written here. Neutrophils live only for few hours, and about 125 billion neutrophils, you remember neutrophils, they are produced every day, each day 125 billion neutrophils are produced, and they help in phagocytosis. WBC, हाँ एक तो वो था आपके बुक में लिखा है कि WBC जो नाम है वाइट ब्लड सेल, इसका नाम वाइट सेल ज़्यादा सही होता, या फिर ल्यूकोसाइट. सेल, साइट मीन्स सेल एंड ल्यूको मीन्स वाइट. सो द बेटर टर्म इज वाइट सेल, नॉट वाइट ब्लड सेल. क्यों? क्योंकि दे स्पेंड 90% ऑफ द टाइम इन टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ. ब्लड में तो वो रहते ही नहीं है, दे स्पेंड ओनली 10% टाइम इन ब्लड. तो वाई कॉल देम वाइट ब्लड सेल्स. लेकिन क्योंकि इतने सालों से, इतने वर्षों से यूज़ हो रहा है, लेट इट बी, वो होता करेक्ट, बट ल्यूकोसाइट टर्म इज़ मोर अप्रोप्रिएट. अब इस टेबल से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं. फ्रॉम दिस टेबल आई थिंक दिस विल हेल्प यू to learn the table with more focus, so please pay attention. We'll quickly discuss these 10 questions. Name an acid dye, eosin. Name a basic dye, methylene blue. Name the smallest type of WBC, lymphocyte. Largest type of WBC, monocyte. Name the type of WBC with single large nucleus, lymphocyte. The single large kidney shaped nucleus, monocyte. Large cytoplasmic granules, eosinophils. Now what are the type? Name the type of WBCs which are involved in phagocytosis and inflammation, neutrophils and monocytes. You have to write both. Produce antibodies, lymphocytes. Name the type of WBC which release histamine and heparin, basophils. Which transform into macrophages, monocytes. Name an anticoagulant, heparin. Heparin, you remember? Heparin was produced by basophils. Name the type of WBCs which are produced in bone marrow. All you write, all the 5 types: neutrophil, eosinophil, basophils, lymphocytes and monocytes. Name the type of WBCs which are produced in bone marrow and lymph glands. Then you have to write lymphocytes only. Name the type of WBCs which are most abundant: neutrophils. Least abundant: basophils. Name the 2 type of lymphocytes. हाँ बच्चों, lymphocytes भी 2 तरह के होते हैं, B lymphocyte and T lymphocytes. Okay, so this was all about the types of WBCs, and in the next video we will discuss the function of WBCs and about blood platelets. Okay, bye bye.